In this video, we will discuss about necessary and sufficient condition for function to be analytic. So here we write down to obtain necessary and sufficient condition sufficient condition for fz to be analytic. Fz to be analytic. Okay, so first we shall prove the necessary condition when we will discuss about the sufficient condition. So for necessary condition, we take as we write down the proof. So necessary condition. दो पार्ट में से प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं? लेट अस अज्यूम दैट fz is analytic which implies that जब फंक्शन एनालिटिक होगा इट मींस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल और फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इट मींस इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट जो डेरिवेटिव होगा इसका एफ डैश जेड which will be unique. This will be unique for each path of variation. For each path of variation. Now, for convenience, we assume अब हम यहाँ पे जैसे फंक्शन एफ जेड है, एफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेड और उसको हम क्या लिखते हैं? वी राइट डाउन एज यू प्लस आयोटा बी। तो यू किसका फंक्शन होगा? यू विल बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई और प्लस आयोटा वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो एफ जेड वी कैन राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ यू प्लस आई वी। नाउ इस एफ जेड को भी आप क्या लिख सकते हैं? तो यू कैन राइट डाउन दिस एफ जेड एज एफ जेड वी राइट डाउन इन द ऑर्डर पेयर एज एफ ऑफ एक्स वाई और दिस कैन बी रिटन एज यू ऑफ एक्स वाई और प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो फंक्शन एफ डैश जेड है वो यूनिक होगा ईच पाथ ऑफ वेरिएशन। तो वी कैन टेक एनी पाथ ऑफ, so then the function f dash z will be unique। और उसके लिए क्या डेफिनेशन होती है f dash z के लिए? we can mention here as also। तो f dash z we can write down a limit delta z tends to 0 f z plus delta z minus f naught or upon delta z। so this we can consider as equation number 1, this we can consider as equation number 2। now we write down for f z plus delta z। अब z plus delta z के लिए आपको लिखना है तो you can write down this as f of, तो this can be written as f z। z को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम? x plus iota y और डेल्टा z को क्या रिप्रेजेंट कर देंगे करस्पॉन्डिंगली? तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा x plus iota delta y। so we write down this as real and imaginary part form, so x plus delta x और कॉमा y प्लस डेल्टा y। तो ऑर्डर पेयर में लिख दिया हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट। नाउ
वी राइट डाउन एज z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू, अब u और v की फॉर्म में लिखना है आपको। आपने एफ जेड को यू वी की फॉर्म में यहाँ लिखा, ऐसे ही आपको एफ ये एक्स वाई में लिखा है ना आपने यहाँ पे। तो हियर वी राइट डाउन इन एक्स वाई फॉर्म दिस, एंड सिमिलरली वी राइट डाउन फॉर एक्स रिप्लेस हुआ है किससे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, और वाई रिप्लेस किससे हुआ है, वाई प्लस डेल्टा वाई से। तो वी राइट डाउन दिस एज, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा u, तो एक्स रिप्लेस हुआ है एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, वाई रिप्लेस हुआ है वाई प्लस डेल्टा वाई से, प्लस आयोटा वी, सेम एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। आप देखिए इक्वेशन नंबर जो 1 हमने अज्यूम किया है फंक्शन एफ डैश जेड वाला, तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड है और हमारा एफ जीरो है। तो नाउ वी राइट डाउन फ्रॉम 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से हम क्या लिखेंगे कि एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट, अब डेल्टा जेड है, अब जेड को कन्वर्ट करना है हमें किसमें, एक्स वाई की फॉर्म में। तो डेल्टा जेड को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जेड कैन बी रिटन एज डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। नाउ वी राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू हमें लिखनी है। तो क्या वैल्यू होगी इसकी, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड की जो इक्वेशन 3 में लिखी हुई है, तो इक्वेशन 3 में ये हो जाएगा यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई और प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। नाउ नेक्स्ट इज this is f naught, oh this we can write down for fz because we are defining for z, so this is for fz here, this is fz. So now minus fz, fz, so fz we have u of xy, so we write down as in second bracket u of xy plus iota v of xy upon z, delta z means delta x plus iota delta y. तो दिस वी कैन गिव एज इक्वेशन नंबर 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब दो केसेस डिस्कस करने हैं हमें यहाँ पे। तो फर्स्ट वी टेक एज द केस फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं कि व्हेन डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अलोंग द रियल एक्सिस, अब रियल एक्सिस के अलोंग हम वैल्यू लेके चल रहे हैं, तो रियल एक्सिस का मतलब हो गया हमारा, जैसे दीज आर द एक्सिस, दिस इज नोन एज द रियल एक्सिस। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द दिस रियल एक्सिस, और रियल एक्सिस पे मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करें, डेल्टा वाई तो जीरो हो जाएगा ऑन रियल एक्सिस, तो रियल एक्सिस, तो दैट मीन्स डेल्टा वाई will be 0, so we calculate delta z as delta x, so delta z is equal to delta x, so this is for real axis. Now we write down this fz, that means from equation number 4, from equation number 4 क्या लिखेंगे हम, ये हो जाएगा एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, अब डेल्टा वाई को आपको जीरो पुट करना है इसमें इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन 4 में जब वाई को जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और ये आ जाएगा वाई, वाई प्लस जीरो हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्लस आयोटा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई, डेल्टा वाई फिर जीरो लिख देंगे। नाउ माइनस, ये हो गया फर्स्ट टर्म, माइनस यू एक्स वाई, एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो दिस इज इक्वल टू
limit delta x tends to 0. So delta x tends to 0. So this can be written as u, the real and imaginary part, u of x plus delta x into y minus u of xy, रियल पार्ट ये हो गया, इसको साथ ले लिया, अपॉन डेल्टा एक्स प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 वी ऑफ, यहाँ पे आयोटा वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू वाई माइनस वी ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब देखिए इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, व्हेन वी यूज द इक्वेशन नंबर 1, so this is the derivative of u, so we write this is the value of del u upon del x, this is the derivative, that is del u upon del x or plus iota del v upon del x. So this is our equation number 5. Now we move to the case second. So for case second, when delta z tends to 0, so along the imaginary axis, along the imaginary axis. So now we are discussing about this imaginary axis y. So we are discussing about this imaginary axis y. So for this, the value of delta z will be iota delta y. So here delta x will be 0 and delta z is equal to iota delta y. So iota delta y. So now from 4, so again from equation number 4, we write down f dash z. F dash z is equal to limit delta y tends to 0. अब डेल्टा एक्स को 0 पुट करना इक्वेशन 4 में, ये क्या जाएगा u ऑफ x y प्लस डेल्टा y प्लस आयोटा v ऑफ x y प्लस डेल्टा y और माइनस u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई अपॉन iota delta y. Now we write down this as separately real and imaginary part. तो डेल्टा y टेंस टू 0. अब यहाँ पे जैसे आयोटा डिनोमिनेटर में है तो आयोटा का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे तो आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में माइनस आई आ जाएगा, तो ये फर्स्ट पार्ट के लिए माइनस आई हो जाएगा रियल पार्ट के साथ, और दिस कैन बी रिटन u ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई और माइनस u ऑफ एक्स वाई और डिनोमिनेटर पर क्या हो जाएगा डेल वाई और प्लस लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 और ये v एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई और माइनस v ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई. So v of x y. Now, so again we use the derivative definition. So when we use the definition of derivative, so this can be written as minus iota, and this is the value of del u upon del y. So this is the value of del u upon del y, or plus this is the value of del v upon del y. So v is the function here. So this is again f dash z. So now this is the equation number 6. So previous we write on 5. So 5 or 6. So from equation number 5 and 6. तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 से दोनों को इक्वल लिख देंगे, दोनों के एलएचएस पार्ट इक्वल है, तो दैट मीन्स 5 क्या है हमारा एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स. So this can be written del u upon del x plus iota del v upon del x is equal to minus iota del u upon del y plus del v upon del y. So now equating the real and imaginary part.
So the equating real and imaginary part of del u upon del x is equal to del v upon del y, and del v uh, we can write down for u in terms of u. So del u upon del y, u के ही टर्म में लिख देते हैं इसको भी. तो del u अपॉन del y इज इक्वल टू आयोटा से आयोटा कहीं से इमेजिनरी पार्ट ले रहे हो, नेगेटिव साइन आ ही जाएगा. तो del v अपॉन del x, del v upon del x. So these are called Cauchy-Riemann conditions. These are called Cauchy-Riemann conditions. These are called Cauchy-Riemann condition. Cauchy-Riemann conditions. ये CR conditions होंगी, necessary conditions. Now for sufficient condition, conversely we prove. Conversely, अब ये sufficient condition. Conversely, let us assume that. अब assume करेंगे जो condition हमने तो किए. ये जो del u upon del x है, del u upon del y है, del v upon del x है, एंड del v upon del y एग्जिस्ट. अगर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूअस भी हैं एंड आर कंटिन्यूअस at point xy and satisfy the CR conditions, Cauchy-Riemann conditions, satisfy Cauchy-Riemann conditions. Cauchy-Riemann conditions को रिपीट करेंगे. del u upon del x is equal to del v upon del y and del u upon del y is equal to minus del v upon del x. Now अब हमने जैसे CR कंडीशन तो यूज कर ली, तब हमें क्या प्रूव करना है कि इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा. सो नाउ del u, so this del u can be written as u x plus delta x and y plus delta y minus u of xy. So this can be written as u x plus delta x, y plus delta y. अब इसमें हमने क्या किया, ये एक टर्म सब्ट्रैक्ट किया, जैसे मीन्स x और y प्लस डेल्टा y ये सब्ट्रैक्ट किया और सेम हमने यही टर्म ऐड कर दिया, u x y प्लस डेल्टा y और माइनस u ऑफ एक्स वाई. ओके, कुछ नहीं किया, बस हमने ये यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ ऐड कर दिया है. नाउ तो वी एक्सपेंड बाय मीन वैल्यू थ्योरम. मीन वैल्यू थ्योरम से एक्सपेंड किया ऐसे, तो डेल्टा u इज इक्वल टू, सो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म डेल्टा x इंटू डेल अपॉन डेल x और u ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू थीटा वन और y प्लस डेल्टा y और प्लस डेल्टा y डेल अपॉन डेल y u x इंटू y प्लस डेल्टा y इंटू थीटा टू. So where the value of theta 1 lie between 0 to 1, the value of theta 2 also lie between 0 to 1. So this is by mean value theorem. By mean value theorem, but by assumptions, del u upon del x is continuous
So when del u upon del x is continuous, so this can be written as absolute value. That means del u upon del x into x plus delta x into theta 1 or y plus delta y minus del u upon del x or into xy. This will be less than epsilon 1. So which implies that so del u upon del x into x plus delta x into theta 1 into y plus delta y minus del u upon del x can be less than epsilon 1. Now we write down this as so the value of del u. This is absolute value. So del u upon del x. So x plus delta x into theta 1 and y plus delta y minus del u upon del x, which is equal to eta 1. So here we can say the absolute value of eta 1, which is less than epsilon 1, which is epsilon 1. So now we can write down this as del u upon del x into x plus delta x into theta 1 and y plus del y is equal to del u upon del x plus eta 1. So this we can consider as equation number 2 और 1 कौन सा है हमारा? This is the equation number 1. This is the equation number 1. Now similarly सेकंड पार्ट के लिए अब मेंशन कर देंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई और यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू थीटा 2 इज इक्वल टू del u upon del y plus eta 2. So this is the equation number 3. Equation number 3. So equation 1 becomes delta u is equal to delta x into del u upon del x plus eta 1 or plus delta y del u upon del y plus eta 2. Similarly अब y के लिए भी similarly delta v we can write down as delta x into del v upon del x plus eta 3 third variable and delta v upon delta y eta 4. ओके अब आपको ये डायरेक्टली पता नहीं होगा मीन वैल्यू थ्योरम बेसिकली क्या होती है. तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट बता देता हूँ. जैसे फंक्शन हम यूज करते हैं एफ एक्स प्लस एच. एफ एक्स प्लस एच दिस कैन बी रिटन एज एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच. तो हियर थीटा लाई बिटवीन 0 to 1. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एच एफ डैश x plus theta s. So we have used this, okay, by using mean value theorem. Now we add above equations. So we write down as delta u plus iota delta v. This equal to delta x and del u upon del x plus eta 1 plus delta y माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स. यार कंडीशन भी यूज कर दी साथ के साथ हमने प्लस ईटा 2 और प्लस आयोटा डेल्टा एक्स और हियर वी राइट डाउन एज वी del v अपॉन डेल एक्स प्लस ईटा 3 प्लस आयोटा डेल्टा वाई और वी वाई इक्वल टू यू एक्स. सी आर कंडीशन हमने यूज कर दी यहाँ पर.
सी आर है हमारी डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इनके प्लेस पे हमने वैल्यू पुट कर दी। यू एक्स के यू एक्स की रखा है, और हमें चेंज किया है किसको, इसको यू वाई के प्लेस पे ये चेंज किया है, और वी एक्स को एज इट इज वी एक्स रखा है, और वी वाई के प्लेस पे हमने यू एक्स रखा है। नाउ वी राइट डाउन एज डेल्टा एक्स, हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। कॉमन लिया तो जो फर्स्ट टर्म है हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये टर्म कॉमन ले लिया यहाँ से, ये और ये, प्लस आयोटा डेल्टा वाई, आयोटा डेल्टा वाई, आयोटा डेल्टा वाई में हमें यहाँ से क्या मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स मिलेगा, और ये आयोटा, तो आई स्क्वायर माइनस वन होता है, तो यहाँ आई स्क्वायर कर देंगे माइनस वन के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा प्लस एक आई हमने बाहर ही ले रखा है, तो वो हो जाएगा आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स, मतलब ये टर्म और ये टर्म। और रहे अभी बाकी टू टर्म्स, तो उसको क्या लिख देंगे, प्लस डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स के साथ में क्या आएगा, ईटा वन प्लस आयोटा ईटा थ्री, और प्लस डेल्टा वाई ईटा टू प्लस आयोटा ईटा फोर, ईटा फोर, तो ये हो गया। नाउ अब डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा वी, ये क्या बन जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू लिख देंगे इसको, यू प्लस आई वी को, तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल एक्स, ये हमारा डेल एक्स, और ये दोनों सेम हो गए, तो डेल एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, तो वी कैन टेक एज कॉमन, सो दिस विल बी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। और ये क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट्स हैं, स्मॉल वैल्यूज हैं, so दिस कैन बी रिटन एज प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वन, स्मॉल इंक्रीमेंट, दिस कैन बी रिटन एज, और डेल्टा वाई इंटू डेल डेल्टा टू, डेल टू। So now when we obtain the value of del w upon del z, so this can be written as, तो ये हमारा क्या हो गया, ये डेल जेड के इक्वल हो गया, यहाँ भी, ओके, so this can be written as del u upon del x प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x, और प्लस ये क्या हो जाएगा, डेल x अपॉन डेल z इंटू डेल वन, प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा z इंटू डेल टू। So this we can write down as del w upon del z minus del u upon del x plus iota del v upon del x. This is equal to del x upon del z into del 1 plus delta y upon delta z into del 2. So the value of this will be less than equal to delta x upon delta z into delta 1 or plus delta y upon delta z into del 2. So this value will less than or equal to absolute value, here also absolute value. So this value always less than equal to delta 1 plus del 2. So when we apply limit delta z tends to 0, so when limit delta z tends to 0, so this del w upon del z is equal to del u upon del x plus iota del v upon del x. So this del w upon del z can be written as dw upon dz is equal to del u upon del x plus iota del v upon del x. अब डेल डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड क्या है, दिस इज द डेरिवेटिव, मतलब हमने क्या अज्यूम करते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड कोई फंक्शन है, और जब डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज एफ डैश जेड। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कि डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड एग्जिस्ट
वो एग्जिस्ट करेगा और क्या देगा, यूनिक वैल्यू। सो इट मीन्स जब यूनिक वैल्यू देगा तो फंक्शन जेड क्या होगा, फंक्शन जेड इज एनालिटिक फंक्शन। So this is the necessary and sufficient condition for analytic function. So this is the sufficient condition. So we remember